हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके साथ एक इंटरव्यू सेशन शेयर करने वाला हूं। एंड इंटरव्यू सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर जेडी क्या है, यानी जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, किस रोल के लिए कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। ओके। एंड इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कैंडिडेट किस तरीके से क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स देता है। देखिए, सो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो जेडी है, और ये जेडी में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो मेंशन है कि कैंडिडेट जो है वो फुल स्टैक डेवलपर रोल के लिए रिक्वायर्ड है। यानी जो कैंडिडेट है उसके पास एंगुलर प्लस Node.js का नॉलेज होना चाहिए। प्लस सेकेंड नंबर पॉइंट में इसमें मेंशन है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास 4 to 8 ईयर्स का। जॉब जो लोकेशन है वो है बेंगलोर। एंड देन नीचे जो है वो इसमें मेंशन है कि रिक्वायर्ड जो है वो एक्सपीरियंस एंड स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जो है वो Node.js में होना चाहिए, Express.js में होना चाहिए, और कैंडिडेट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए Angular 10 और एबव वर्जन के लिए। ओके। साथ के साथ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल जो है वो होना चाहिए, ताकि वेब कॉन्सेप्ट का फंडामेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नॉलेज वाइज जो है इसमें मेंशन है कि टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट होना चाहिए, HTML होना चाहिए, CSS होना चाहिए, बेसिकली रेस्ट APIs का नॉलेज होना चाहिए, JWT का होना चाहिए, एंड JSON जो है वो होना चाहिए। और सबका बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो उस पर्सन के पास अपडेटेड होना चाहिए। ओके। साथ के साथ जो है वो इसमें मेंशन है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगुलर मटेरियल एंड फ्लेक्स लेआउट। सो बेसिकली मटेरियल डिज़ाइन जो एंगुलर का है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए पर्सन को, कैंडिडेट को। देन रिलेटेड टू डाटाबेस जो है वो यहाँ पे रिलेशनल डाटाबेस जो है वो SQL की रिक्वायरमेंट है। एंड इसमें पॉइंट नंबर 5 में मेंशन है कि ओवरऑल जो है वो 4 ईयर प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड 3 ईयर्स प्लस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर 3 ईयर्स प्लस हैंड्स ऑन का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मीन्स होता है कि लाइक आप एक डेवलपर हैं तो आप बहुत सारे लैंग्वेजेस पे काम करते होंगे, बट हैंड्स ऑन मीन्स जो जेडी में रिक्वायर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, उस लैंग्वेज पे कितने साल आप काम किए हैं या उस फ्रेमवर्क पे कितने साल काम किए हैं, दैट इज़ द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ओके। सो यहाँ पे एंगुलर एंड Node.js पे आपको जो है वो 3 ईयर्स प्लस जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, दैट इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके। सो नीचे जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो मेंशन है गुड टू हैव। सो गुड टू हैव मीन्स लाइक नॉट मैंडेटरी, बट या अगर ये नॉलेज है तो हम जो है वो कैंडिडेट को प्रायोरिटी पे जो है वो ऑफ़र करेंगे। सो हम ये इसमें रिक्वायरमेंट जो गुड टू हैव है उसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ ORM लाइब्रेरी लाइक Next.js एंड SQLite। सो बेसिकली ये ORM लाइब्रेरीज़ हैं जो DB कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, डाटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो अगर ORM का नॉलेज है तो दैट इज़ परफेक्ट। ओके। सेकंड जो है वो इसमें है कि कोई भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क, वैसे तो इसमें जस्ट डिमांड है, लेकिन हाँ अगर कोई और भी है, क्योंकि इसमें मेंशन है कि एनी अदर फ्रेमवर्क भी अगर कोई टेस्टिंग टू फ्रेमवर्क जानते हैं तो दैट इज़ गुड टू हैव बेसिकली। क्योंकि अगर आप कोड लिखते हैं और आपके पास टेस्टिंग टूल्स का नॉलेज है और टेस्टिंग कोड टेस्ट केस लिखने का नॉलेज है तो दैट इज़ ऑसम। ओके। सो लास्ट पॉइंट इज लाइक एक्सपीरियंस इन NGRX, GraphQL, अपोलो क्लाइंट। सो बेसिकली अगर NGRX में एक्सपीरियंस है या GraphQL के पास नॉलेज है, सो GraphQL और अपोलो क्लाइंट्स लाइक बोथ आर इंटर रिलेटेड। ओके। सो GraphQL जो है विथ अपोलो क्लाइंट से अगर है तो बेहतर है। अगर AWS का क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज है या कोई भी क्लाउड सर्विसेज AWS का यूज़ कर चुके थे, मतलब एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए भी गुड टू हैव बेसिकली मीन्स अच्छा है, हम उसे कंसीडर एज ए प्रायोरिटी करेंगे। ओके। सो डॉकर एंड कंटेनर का भी नॉलेज अगर है तो दैट इज़ परफेक्ट। सो आइए हम ये तो हमने देखा कि ये जेडी की रिक्वायरमेंट जो है वो इस तरीके से है कि जेडी जो है वो क्या है, कैसे है, जेडी में क्या क्या हम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। सो हम जेडी के बाद आगे हम देखते हैं कि आखिर जो कैंडिडेट का प्रोफाइल है, यानी कैंडिडेट का रिज्यूमे है, उसमें ये जेडी कितना मैच कर पा रहा है, और
हम कैंडिडेट के साथ फर्दर जो है और प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं। ओके, सो हम कैंडिडेट का रिज्यूमे पे आते हैं। सो कैंडिडेट का यहाँ रिज्यूमे हमने देखा कि हाँ कैंडिडेट ने जो भी है ऑब्जेक्टिव इज़ ओके, बिकॉज हमारा भी फोकस पॉइंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ना नहीं है। हाँ डेफिनेटली ड्यूरिंग द रिज्यूम इंटरव्यू सेशन जो है वो हम ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान रखेंगे, बट अभी मैं एक शॉर्ट समरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हम आपसे ऑब्जेक्टिव एंड समरी पे ज़्यादा जो है वो हमारा जो है वो है कि लास्ट एक्सपीरियंस क्या था, कौन कौन सा टेक स्टेक्स और कौन कौन सा स्किल्स जो है वो नॉलेज है। ओके, सो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें मेंशन है कि फुल स्टैक डेवलपर जो है वो ओवरऑल 8 ईयर्स ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो इसमें जो है वो इनको है। ठीक है, सो ओवरऑल 8 ईयर्स एक्सपीरियंस जो है वो एज ए फुल स्टैक डेवलपर है, एज ए समरी ये मेंशन है। ठीक है, सो टोटल ओवरऑल 8 एक्सपीरियंस कोर स्किल्स में जो है वो इसमें मेंशन है कि 7+ जो है वो कोर PHP कोऑर्डिनेटर, सो जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली हम अगर देखते हैं तो हमारा कुछ कुछ पॉइंट्स तो कवर हो रहे हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS का जो है वो रिक्वायरमेंट जो थी वो यहाँ पे मेंशन है कि इन्हें आता है। ठीक है, सो नीचे हम देखते हैं कि इसमें मेंशन है कि 5.6 ईयर्स एक्सपीरियंस इन Node.js एंड Express.js। सो 5.6 ईयर्स जो है वो Node.js और Express.js में एक्सपीरियंस है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट नंबर 1 फुलफिल हो गया, पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये फुलफिल हो गया जो हमारी रिक्वायर्ड थी। गुड टू हैव में हमने जो DB में हमने MySQL पूछा था, तो MySQL इज ऑल्सो सबसेट ऑफ SQL। सो यहाँ पे जो है वो हमारा DB का भी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जा रहा है। नीचे देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे मेंशन है कि 2.5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन जावास्क्रिप्ट, इन टाइपस्क्रिप्ट, एंगुलर एंड रिएक्ट.जेएस। सो बेसिकली इसमें मेंशन है 2.5। सो यहाँ पे एक पॉइंट है जो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक वीक पॉइंट है, बिकॉज हैंड्स ऑन रिक्वायरमेंट जो है वो 3 ईयर्स प्लस है, बट 2.5 है। अगर इंटरव्यू के सेशन में अगर ये पर्सन जो है वो साउंड्स लाइक 3 ईयर्स प्लस है, तो हम जो है वो इन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसे 2.5 सो नियरली 3 है। सो अगर इट डिपेंड्स अपॉन द लाइक बेसिकली यू कैन से द टेक्निकल राउंड ऑफ द इंटरव्यू। सो कैसा टेक्निकल राउंड जो है वो इंटरव्यू में जाता है उस पर डिपेंड करता है हम इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं। ओके, बट मोर और लेस अगर इनका साउंड्स गुड रहा तो डेफिनेटली हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, उनके इसके बाद इसमें मेंशन है कि AWS के कुछ कुछ सर्विसेज इन्होंने मेंशन किया है, लाइक EC2, S3, RDS एंड लैम्डा सर्विस जो है वो इनके पास क्लाउड सर्विस का नॉलेज है। सो इट्स गुड टू हैव। ओके, सो बेसिकली हम अगर अभी थ्रू आउट अभी तक हम अगर देख पा रहे हैं तो हमने जो है वो जो हमारी JD थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो फुलफिल जो है वो पर्सन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो जैसा मेंशन है ऊपर पर्सनल एक्सपीरियंस में, उसमें जो है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जैसा मेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पर्सन फुलफिल कर रहा है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि आखिर लास्ट एक्सपीरियंस तो लास्ट वर्किंग जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे इन्होंने किया, कौन कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया। क्योंकि जो लेटेस्ट टेक स्टैक अगर आप करेंटली वर्क कर रहे हैं तो इट्स गुड कि आप जो है वो करेंटली जो है वो आपके पास लेटेस्ट नॉलेज है। बेसिकली आप एक्टिव नॉलेज है, नॉट लेटेस्ट कह सकते हैं, आप एक्टिव नॉलेज कह सकते हैं। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आपको पता तो होता है बट आपने लास्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स से यूज़ नहीं किया है, तो वो चीज़ें जो है वो थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। ओके, सो इसमें मेंशन है, सो इसलिए हम सबसे लेटेस्ट जो है या लास्ट आप कहिए लास्ट वर्क और प्रोजेक्ट्स को हम ज़रूर कंसिडर करते हैं कि आखिर लास्ट में कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किया गया था और उसमें कौन कौन सा टेक यूज़ किया गया था। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें मेंशन है लास्ट जो है वो कि इसमें टेक जो यूज़ किया गया है उसमें मेंशन है कि 4 ईयर्स जो है एक्सपीरियंस मल्टीपल, और इस कंपनी में इन्होंने काम किया है वो है टाइपस्क्रिप्ट, Node.js एंड एंगुलर। सो बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट था वो यही है। हालांकि इन्होंने PHP, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट.जेएस और Vue.js भी मेंशन किया, बट हमारा जो है मेन मोटो ये है कि क्या इन्होंने अभी लास्ट कोई भी प्रोजेक्ट या लास्ट कंपनी में जो काम कर रहे थे वहाँ पर ये टेक स्टैक इन्होंने यूज़ किया कि नहीं। तो इन्होंने यूज़ किया है तो हम जो है इस कैंडिडेट के साथ कंटिन्यू जो है वो इजीली जो है वो इंटरव्यू को कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है वो हमारा कैंडिडेट का प्रोफाइल है। थ्रू आउट हमने जो है वो देखा, मोर और लेस जो है वो हम इस कैंडिडेट के प्रोफाइल को समझ चुके हैं।
एंड नीचे आते हैं स्किल सेट्स में, तो वही अगेन वही चीज़ें मेंशन है कि टाइपस्क्रिप्ट एंगुलर पता है, ठीक है, नोड जेएस बैकएंड के लिए पता है, एक्सप्रेस जेएस पता है, पीएचपी लारावेल पता है। हालांकि पीएचपी लारावेल पता है उससे हमें कुछ खास लेना देना है नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जेडी जो है वो मेन रिक्वायरमेंट नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का है बैकएंड के लिए, एंड फ्रंट एंड के लिए जो है वो एंगुलर है। ओके, बट ठीक है, गुड टू हैव। अगर कोई कैंडिडेट के पास ये सब पोटेंशियल है तो उसे हम ज़रूर प्राथमिकता और प्रायोरिटी पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल सो बेसिकली एजुकेशनल जो एरिया होता है वो कंसिडरेबल होता है, बट इन केस ऑफ फ्रेशर जो है वो ये ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इन केस ऑफ एक्सपीरियंस होल्डर ये इन चीज़ों को हम ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करते। रीज़न ये है कि हमें ये पता होता है कि ये ऑलरेडी जो है वो एक्सपीरियंस होल्डर है, यानी जो चीज़ हमें चाहिए उसमें पर्सन जो है वो काफ़ी मेहनत किया है एंड अप टू दिस लेवल जो है वो अचीव किया है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्च एंड सो आई डोंट थिंक कि हमें अब और डिटेल में जाने की ज़रूरत है। सो हमें जो है वो इस रिज्यूमे में से ये आउटपुट मिला कि हम इस कैंडिडेट को लेके इंटरव्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो आइए हम अब कैंडिडेट के साथ जो है वो रियल इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो आइए हम कैंडिडेट के साथ जो है वो इंटरव्यू सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बात के लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि ये एक रियल इंटरव्यू है, सो यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट का फेस, नाम या कोई भी जो कंपनी है उसका कोई भी किसी भी टाइप का इन्फो शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है और सभी की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। सो सिर्फ ये नॉलेज पर्पस के लिए है, लर्निंग पर्पस के लिए है, ताकि आप उन सब चीज़ों को सीख पाएँ और समझ पाएँ कि कैसे इंटरव्यू होता है और कैसे इंटरव्यू में क्या क्या प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए हम इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। या वेव, सो हाउ इज़ गोइंग ऑन? I went through the resume. It's nicely present. Okay. So could you please tell me about yourself, especially the last project which you delivered, because you mentioned you used PHP, Node.js both. So I'm unable to segregate that in which project you use PHP, in which project you use Node.js. Okay. So mainly, please highlight the project where you use Node.js. Okay, sir. It's first of all, thank you so much. Give me opportunity to introduce myself. My name is Vaibhav Sharma. It belongs to Bikangaon, situated by Khargone district, Madhya Pradesh. I study in engineering in CS stream from NPITS College Khandwa in University's RGPV Bhopal. I am total IT experience is 8 years. I am worked on two company. I worked on Mindy System Private Limited is November 2015 to July 2019. I am worked on outing coders is within 4 years. I am relevant experience is 7-year experience is PHP, JavaScript, HTML and CSS, and 3-year experience is Laravel, and 5.6-year experience is Node.js, and 2.5-year experience is React and Angular. And also working with database is 5 plus experience is MySQL, and 2+ experience is MongoDB. And also working is cloud services is a 1.5-year experience is AWS, is EC2, RDS and Lambda services. I am current position is a senior software engineer with team lead, handling the team, and team member is the 10. I am working on the backend and front end is both of part. I am currently project is the two project. It's Happy to Learn and HR Today. Is both of the backend part is the Node.js and the front end part is the HR Today is Angular, and Happy to Learn is the React, and database is the MongoDB. Both are CRM based domain. It's working on this both. I am working on the Node.js and front end part both are, and is the team handling, is the team management and code optimization, code enhancement is working on that. And coming my family background, we are living with 5 members in our family. Me, my father, mother, my wife, and my son, and my son. And my father is a pujari, my mother is a homemaker, and my wife is a teacher. Okay, wait. Sorry, Vaibhav. Okay. So basically, like, okay, I'm not going to depth inside the family and all, okay, because this is the technical okay round, okay.
and Okay, okay. mainly focus towards the tech stacks and your last project, what you delivered. Okay. So Yes. Yes. moving towards, can I go with some technical questions? Okay. Okay, thank you. So basically I want to know that like you worked on both PHP as well as Node.js. Okay. So Yes. 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 okay. So in PHP we use the synchronous method with multi-threaded operation, correct? Yes. But in Node we use asynchronous single-threaded. But Yes, sir. as of now, computers are going with many threads, like 32 threads, 16 threads, and all, because every day the CPU processor is going to enhance with the threads. So Yes, yes, sir. is it okay with Node.js having the single threaded over PHP which having the multiple threaded? Hmm. Yes, sir. Is a PHP is the multi-threaded is using of the optimization is the optimization is the very the hot process. And Node.js is the JavaScript language is the only the event and it's a single threaded part. There is a handling of the single threaded. Is there using of the part is handling the client request to web server. In web server, they internally manage the limited thread of this provide of queue. Is event queue is the using of the place and request all services request and them the process is known as the event queue. There is the event web server is the internally is the correspond component event loop goes the defined loop and receive request and process then the day-to-day part. And only the single view references concurrency is the using of the part in the non-blocking either client request is blocking is the IO operations. This process everything prepare response is the sending back to back is the client. It's the mainly the fasted loop is the Node.js. It's Okay. using of the because the some part was requested. Okay. Is any way that we can use the multiple threads in Node.js? Yes, sir. Is a multiple threaded using of the part in a using in the load balancing and using of the multi-threaded part. Is a multi-threaded using of the work using the work thread. Is a that is example of how the concurrently work thread module is a multi-threaded express is the work thread module is using of the provided of the multi-threaded is the child process is universally running part is the simultaneously. Okay. Have you any idea of cluster? Have you ever used that? Yes, sir. Is the cluster part is the using of the data. Is the JavaScript cluster is a method. Yeah, the process of the multiple instance is the created of the same time. It's among the distribution of the thread. It's the work thread is a using of the cluster part. Mm-hmm. It's a multiple. Yes, it's a work thread is example is the library is the cluster Mm-hmm. using of the multiple threaded. But is the single threaded the this parent thread to the convert to the child thread. At the same time, the dependency of the main thread is created as a copy some application to the machine. In it stands sometimes load balancing distribution. How we can pass the data from child component to parent component? Is the using of the data is the work thread is directly work in instance. No, sorry. So I'm asking, sorry, I'm asking the questions from Angular. How I can pass the data from child component to parent component?
in Angular? The child component is the using of the is the directly component. Okay. Yes, So and then the do you using have of the okay, go on. there is a mainly part of the child using of the child component is the specify the selector is the child component. It declares classes and array inherit to part of the component template. Okay. So It's a nested class. do you have any idea? Nested class. Okay. Do you have any idea of Angular lifecycle hook? Yes, sir. Is the using of the Angular is the on it is the using of the on it change on its content text ng content. Okay. Hello, and ng on it destroy. Okay. Perfect. So have you ever used observable? Yes, sir. Is a observer is the part of the distribution part of the data. Distributed part of data. And what is observer? Is a observer is the using of the somebody using of the effect of the behavior of the part. Okay. The component part is the behavior of the working on data method the data collection. Is alternative is sometimes the alternative classes is the execution of the data part. Okay. Have The you using of the observer. Okay. Is a Have you ever used NGRX in your project? sorry. Have you ever used NGRX in your project? Yes, sir. When, like, how? Do you have any, like, give me a small info of NGRX? Sir, is NGRX is the state management is the using of the normally the NGRX is using of the Angular part is the reactive applications part is the framework on the is the Redux pattern is using of the event application event drive the state management systems and the two part of the NGRX and NG is the NGRX and NGJX. This NGRX is the Angular implementation of the Redux unit utilize the RJJX part. This implementation. Okay. This is a surrounding state emulated process. Okay. So, Mr. Vago, please share your screen. I'm sharing some basically a script. Please share your screen. Yeah. Okay. Shared? So share your screen. Share your entire screen. Yes. 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 Okay. I text you one message. Yeah, chat. Open the chat. Okay, so what will the output of console log for A is B, and the third is second console. So what will the output of first to a console? Sir, both are true. Okay, why? That is the first console is the A equal to B is the operator is the single is the checking of the value, and third second is the triple equal to is the check of the value and data type is both of the same is number. Okay,
I'm hitting another script. Oh, What will the okay. output of this console? Yes. Case number 1 and case number 2 also. I said okay, case number 2. Yes, yes, yes. Just need to just Sir, B is the 300. Mm-hmm. Is the yes, sir. Is the second answer is the console B is the 300 is output, and the name is the instinct. Yeah. And is P dot name is a PQR is a modular answer. Is a convert of the nested part is the console log of the PQR. Third is answer is the PQR, sir. Okay, so in first case you are saying that the answer will be 300, correct? 300 is directly is the directly assigned, sir. And third answer is the assigned, but is the D the working on the modular is the net is the mod is the mutable part using of the replace of the nested object is a nested class. So it working on the replace part of the name. The C to name is the D name is the working on that. The C name is the PQR. Okay, do you have any idea of how the D name will change in such case? Like if I don't want to change the name, then how I can write the script? I don't want to Is change. the Yeah, can show me. Yeah, I don't want to change the name of C. So C should print ABC. How I can write that code? is Yeah, no. So I'm asking. normally No, I'm asking that I want to print C as a ABC. Then how I can write the code? if normal the C is the ABC Mm-hmm. is a normal is a not object Yeah, but object I want to or print ABC. Then how I can write the code? My question is that. I'm not considered not clear answer to questions. Is a declaration of the C equal to Okay. So it is printing C is the PQR. object. Currently, it is printing PQR. Correct? Oh, okay. Yeah. So I have a scenario that I want to update the name value of D only. I don't want to change the value of C. You got my point? I want to change the Yes, sir. value of D only, don't want to change the value of C. So how I can write the code? You got the question, na? Yes, sir. Okay. I'm about the question. Okay. Then how to write the code?
Okay, because we have very less time, it's a 30-minute slot. So moving to the next question, okay? Can we? Okay, 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 sir. Sure. So what is hosting in JavaScript? Sir, is the hosting is the more of the declaration part. Is the more declaration is the more to the top. Is working on the declaration part. Is the example for is the sometimes is the variable is the declared the d and the assigning part. And the sometime is the assigning of the same is the assigning is the file and declaration is the variable is the x. This part is the heuristic. Okay, and what is closure? Sir, is the closure is the combination of the part is a lexical environment is the outer function in inherited in using of the entire of the part of the inner function is a some example for the functions. Yeah, no need. Okay, no need of example. Okay. Yes, Yeah. Thanks, Vaibhav. Is anything you want to ask? no sir. Okay. Thanks, Vaibhav. It's a nice meeting with you. Okay, I will share my feedback to HR team. You can collect your sorry. You can collect your Yes sir. feedback from there. Okay. Sure. Okay. Thank Fine you. sir. Good luck. या है दोस्त सो बेसिकली इंटरव्यू जो है वो सेशन 30 मिनट्स का ही टाइम था जिसमें कैंडिडेट ने कुछ देर ज्वाइन करने में डिले कर दिया सो हम 30 मिनट से बियॉन्ड नहीं जा सकते थे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स ओके सो हम 30 मिनट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो काफ़ी कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश किए काफ़ी कुछ इन्वायरमेंट एरिया को समझने की कोशिश की सॉरी मैं यहाँ पे फीडबैक नहीं शेयर कर सकता सो आप प्लीज़ अपने तरफ से एनालाइज कीजिए कि कैसा ये रहा इंटरव्यू एंड इस इंटरव्यू से आपको क्या क्या सीखने को मिला एंड थैंक यू